Good afternoon, dear learners. I welcome you all to the senior secondary course Data Entry Operations. Today we are going to talk about basics of computer. Let me give you an overview of what we are going to discuss in our today's session. Firstly, I am going to give you a brief of working of computer. Then we will talk about different components of computer. Some of the input devices we are going to discuss in detail. Then I am going to talk about central processing unit CPU. Then we are going to talk about output devices, then software, then we will talk about computer languages, compiler and assembler. So working of a computer. तो वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर में हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग कैसे होती है, कौन से पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डेटा कहाँ से कहाँ जाता है. तो पहले तो कंप्यूटर के लिए तीन बेसिक यूनिट हम लोग कंसिडर करते हैं, एक इनपुट यूनिट, एक सीपीयू यूनिट और एक आउटपुट. इनपुट का काम होता है कि वो हमारे सीपीयू को रॉ डेटा देगा जिसपे की प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और फिर जब सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो उसको आउटपुट डिवाइस को देता है. अब सीपीयू के इटसेल्फ तीन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इनको हम लोग जब सीपीयू डिस्कस करेंगे तब बाद में करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि एक बेसिक कंप्यूटर की वर्किंग में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. जो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्टली द इनपुट डिवाइसेस कम इनटू पिक्चर. दे फीड द रॉ डेटा टू द सीपीयू. The CPU then performs the processing on the raw data, and then the resultant is given to the output device, and the output devices displays the result to the one who is working on the computer. So the working of a computer can be broadly categorized into following four functions or steps. First is receive input, second is process the information, थर्ड इज स्टोर इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ इज प्रोड्यूस आउटपुट. जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को चार मेजर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से कि पहला स्टेप होता है इनपुट को रिसीव करना, दूसरा स्टेप होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, तीसरा स्टेप होता है कि जो इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस किया है उसको हम कहीं पर स्टोर करें, और चौथा स्टेप होता है कि हम आउटपुट प्रोड्यूस करें. जो भी हमारा इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करा था उसको आउटपुट डिवाइसेस के जरिए यूजर तक पहुंचाएं. ये होती है बेसिक वर्किंग कंप्यूटर की. अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. तो कंप्यूटर हैज फोर मेन कंपोनेंट्स बेसिकली: इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस. सो दीज फोर आर द मेजर कंपोनेंट्स जो कि जरूरी है एक कंप्यूटर की वर्किंग के लिए. इनपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस. अगर इनपुट डिवाइस नहीं होंगे तो हमें कंप्यूटर तक, सीपीयू तक अपना डेटा देने का कोई जरिया नहीं मिलेगा. तो दैट इज व्हाई इनपुट डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सीपीयू, सी इफ यू डोंट हैव any processing done with your data, then the computer is of no use. So basically CPU is the major functioning that way, because the data which we are giving to the computer is basically processed by central processing unit. फिर मेमोरी का पर्पस होता है कि जो डेटा प्रोसेस कर रहा है सीपीयू वो उसको स्टोर करे, और आउटपुट डिवाइसेस उसको आगे जो हमारा प्रोसेसिंग होके रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले करें. So that is how these four are the major components of a computer. Now let us talk about each of these components in detail. So first is input devices. As I told you, an input device is used to get data or instruction from the user. तो जैसे कि जब आप कुछ भी काम करने के लिए कंप्यूटर पर बैठते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ डेटा कंप्यूटर को देना पड़ेगा जिसपे कि वो प्रोसेसिंग करेगा. तो वो डेटा जिस भी डिवाइस से हम कंप्यूटर को देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस. अब ये डेटा पास ऑन किया जाता है सीपीयू को ताकि उस पर प्रोसेसिंग हो सके और जो उसका रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट है, वो आ सके. So that was about input devices. Now let us discuss about some of the input devices in detail. So the common one is keyboard. So as you can see on your screen, this is a typical keyboard we have. So keyboard is the most common and very popular input device which helps to input data to the computer. Keyboard जो है
वो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी तरह का डेटा कंप्यूटर को फीड करने में हेल्प करता है. जो द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, although there are some additional keys provided for performing additional functions. एक जो बेसिक लेआउट होता है कीबोर्ड का, that is almost similar to the one of a traditional typewriter, but the keyboard have some additional keys. कीबोर्ड के पास टाइपराइटर के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल कीज होती हैं जिससे कि वो कुछ एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है other than the typewriter. Now another input device is mouse. You must have heard about mouse and also you must have used it. This is how a mouse looks like. This mouse is also a very common input device. I want you to see the picture of the mouse. Yes, so this is a mouse. Mouse is basically a pointing device that controls the movement of the cursor or the pointer on a display screen. जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो एक कर्सर आपको स्क्रीन पर दिखता है, तो माउस के यूज से आप उस कर्सर को, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हो. आपको उस कर्सर से जिस भी आइकॉन को, जिस भी फाइल को, जिस भी बटन को सेलेक्ट करना है वो आप कर्सर से, माउस के कर्सर से कर सकते हो. तो बेसिकली माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे कि आप स्क्रीन पर जो आपको कर्सर दिखता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो. जैसे ही आप माउस को मूव करोगे तो जो पॉइंटर होता है जो स्क्रीन पर दिखता है वो भी, जैसे अगर आप लेफ्ट में अपना हाथ मूव करोगे तो कर्सर भी लेफ्ट में मूव करेगा, राइट में मूव करोगे तो राइट में कर्सर मूव करेगा. सो एज यू मूव द माउस, द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. So that is about mouse. Now the next input device we'll be talking is scanner. Scanner is an input device that can read the text or an illustration printed on paper and translates the information into a form that the computer can use. I will repeat about a scanner. Scanner is an input device that can read text or illustration printed on a paper and translates the information into a form that the computer can use. So see, understand now, a scanner is an input device which basically reads the text or the illustrations, pictures, drawings which are printed on the paper, and it basically translates the information into a form, into the digital format basically, so that the computer can use and understand that document. So that is the purpose of a scanner. Now the next input device we'll be talking about is optical character recognition. So an OCR, an optical character recognition, is a device that is used for reading text from paper and translating the images into a form that the computer can understand. So basically an OCR is a device which is used for reading text from the paper and translating the images into a form that computer can understand. An OCR is used to convert books, magazines and another such printed information into the digital form. So that was all about optical character recognition. The next device we will talk about is optical mark recognition, which is OMR. So optical mark recognition, also called mark sense reader, is a technology where an OMR device senses the presence or absence of a mark such as a pencil mark. OMR is widely used for accessing the objective examination involved multiple choice questions. आप लोगों ने कभी भी कोई एग्जाम दिया हो जिसमें कि मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, सपोज जैसे एक क्वेश्चन है उसके पास 4 चॉइसेस हैं, आप उसमें से कोई एक आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जिस शीट पे हम लोग, जो रिस्पांस शीट होती है जिस पे आप अपना रिस्पांस फिल करते हैं, वहां पर आप किसी भी 4 सर्कल्स में से एक सर्कल को फिल करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलरली किसी 4 सर्कल्स में से एक सर्कल को फिल करते हो. वहां पर हमारी OMR टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन. तो जो आप पेंसिल या पेन से मार्क करते हो वो एक उस डिवाइस को, मतलब जो डिवाइस में जब हम शीट को इनपुट देते हैं तो उन सर्कल्स पे वो एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ मार्क से डिटेक्ट करता है कि रिस्पॉन्स, जैसे उसमें फेड है ऑलरेडी कि अगर इस क्वेश्चन में सर्कल नंबर 3 पे मार्क्ड है तो मींस दैट इज करेक्ट, और अगर किसी और पे है तो दैट इज इनकरेक्ट.
तो इस तरह से वो ऑलरेडी फेड होता है और इस तरह से वो मार्क्स को रीड करता है, मार्क्स की प्रेजेंस और एब्सेंस से वो काम करता है. तो दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली मेजरली यूज्ड इन टेकिंग एग्जामिनेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So I hope you have understood what an optical mark recognition is. और आप लोगों ने obviously इसको use भी करा होगा, पर आपको पता नहीं चला होगा कि हाँ this is on what technology this concept is based on. So next is a barcode reader. A barcode reader is a photoelectric scanner that reads the barcodes, vertical strip black and white marks printed on product containers. तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब भी किसी सुपरमार्ट से, किसी हाइपरमार्ट से कोई सामान खरीदते हैं, हर एक के ऊपर एक छोटा सा बारकोड होता है. जब आप उसकी बिलिंग कराते हैं तो बिलिंग काउंटर पे वो अपने बारकोड रीडर से उन बारकोड, जो भी उस आइटम के ऊपर छोटा सा बारकोड है उसको स्कैन करते हैं और उसको स्कैन करते ही उनके सिस्टम पे उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं. तो दिस इज बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी, वो जो बारकोड होता है, बारकोड इज बेसिकली एक वर्टिकल स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड व्हाइट मार्क्स होते हैं वर्टिकल स्ट्रिप्स में, जो एक कंबाइन होके एक प्रॉपर बारकोड बनाता है. और जब हम रीडर से, जो बारकोड रीडर होता है जिसमें कि ऑलरेडी वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको स्कैन करोगे बारकोड को, तो वो सारा उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिस्प्ले कर देता है. सो दिस इज हाउ बारकोडिंग वर्क्स. The barcode reader scans the barcode reader of the product and checks the description and the latest price of the product. So that is how a barcode reader works. I'll once again repeat, a barcode reader is a photoelectric scanner that reads the barcodes. The barcodes are vertical strip black and white marks printed on the product containers. The barcode readers scan the barcode of the product and checks the description and the latest price of the product. Now the next device we will be talking about is light pen. A light pen is an input device that utilizes a light sensitive detector to select objects on a display screen. एक पेन होता है, basically that is called a light pen. उसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है. जब भी आप उसको डिवाइस पे यूज करते हो, जैसे आपका मोबाइल फोन है, टैबलेट है, कुछ भी है, तो आप जब भी उस लाइट पेन से स्क्रीन पे मूव करोगे या किसी चीज को सिलेक्ट करोगे, तो जो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जिसको कि आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसको सिलेक्ट करके आगे उसकी प्रोसीडिंग्स करता है. तो एक ये जो लाइट पेन होता है वो बेसिकली लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. So that is how a light pen works. Now we will be talking about central processing unit. So now before central processing unit, we have talked about a number of input devices. We have talked about keyboard, we have talked about mouse, OCR, OMR and a light pen, barcode reader, etc. I hope that you must have understood what the concept of input devices is. Input devices are basically the devices which take the data from the user and then gives the information to the CPU for processing. So this is the role of the input devices. Now let us talk about central processing unit, CPU. CPU is the brain of your computer. So why do we call CPU the brain of the computer? There must be a reason behind it. It is because it is the CPU which performs the basic operations, which performs the necessary processing. The input devices just takes the information as it is from the user. The processing is done by the CPU. Any type of instruction given to the computer using any of the input devices has to be sent to the CPU for execution. Without sending the data to the CPU, the data is of no use. Now, a typical CPU has three major components: the control unit, CU, the arithmetic logic unit, ALU, and the memory registers. So, as I told you in the beginning of the session also, there are three parts of a CPU: the control unit, the arithmetic logical unit, and the memory registers. So, now we are going to talk about each of the different component in detail. So the first part I will be talking about is control unit. The control unit manages the instructions given to the computer. It basically coordinates the activities of all the other units in the system
by instructing the rest of the components of the computer about how to carry out a program's instruction. Now, if I talk about control unit, so it is basically used for coordinating all the different activities of the computer. So it basically tells the computer about how to carry out any program's instruction. So it actually manages the instructions given to the computer. Any instructions which are given to the computer are generally managed by the control unit. The control unit basically coordinates all the activities of all other units of the CPU in the system by instructing the rest of the components of the computer about how to carry out a program's instruction. Conceptually, the control unit fetches instruction from the memory, decodes them and directs the various units to perform the specified function. So control unit is also known as the nervous system of the computer, nervous system of the CPU, because as your nervous system of your body, is responsible for your balancing, for your coordination, for everything, the control unit is responsible for balancing the work of the CPU. So the control unit fetches the instruction from the memory, decodes them and directs the various other units, the other parts to perform the specific functions. So that is how a control unit functions. Now let us talk about arithmetic logic unit ALU. Now ALU performs two types of operations, arithmetic and logical. The arithmetic operations are the fundamental mathematical operations consisting of addition, subtraction, multiplication and shifting operations. The logical operations consist of Boolean comparisons such as and, or and not. So the ALU is responsible for arithmetic functions and logical operations. अब arithmetic operations में कौन कौन से operations involved हैं? इसमें सारे fundamental mathematical operations जैसे कि addition, subtraction, multiplication and shifting, ये सब के सब arithmetic operations होते हैं जो कि ALU संभालता है. और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि बूलियन अलजेब्रा के जितने भी ऑपरेशंस हो गए जैसे कि एंड परफॉर्म करना और परफॉर्म करना, नॉट परफॉर्म करना, ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस भी ALU संभालता है. Now let us talk about memory registers. Now computers uses a number of special memory units called registers. A memory register is a special storage area that holds the data and instructions temporarily during processing. Now, since this is internally located in the CPU, the processing time is very less. अब जब डेटा पे काम करेगा CPU और डेटा पे प्रोसेसिंग करेगा तो उसको ज़रूरत पड़ती है कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल डेटा स्टोर करने के लिए. उस पर्पस के लिए हमारे पास मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं. That is why memory registers are special storage that holds data and instructions temporarily. जब तक उनसे related processing हो रही है तब तक वो उस registers में उनका data रहेगा temporarily. Once the instruction switches, the data also switches. So और जो registers होते हैं वो internally CPU में located होते हैं तो इसलिए जो उनका processing time होता है वो भी बहुत कम होता है. So this was all about the different parts of CPU, the control unit, the arithmetic and logic unit and the memory registers. Now we are going to talk about output devices but after a short break. So let's take a short break. करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम
अपना रास्ता स्वयं चुने, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय के लोट से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वह विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी बातें। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बाटे। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, Welcome back, dear learners. So before going for the break, we were discussing about the basic working of the computer, input devices such as keyboard, mouse, barcode reader, optical character recognition, optical mark recognition, light pen, etc. Then we talked about the different components of a CPU, control unit, the arithmetic and logical unit, and the memory unit. So now we will be talking about output devices. Output devices receive information from the CPU and present it to the user in the desired form. So basically the major purpose of the output device is to receive the information from the CPU and present it to the user in the desired format. जो भी प्रोसेसिंग CPU करता है डेटा पे और जो भी फिर इंफॉर्मेशन वो एक रिजल्ट के फॉर्म में निकालता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस को दी जाती है ताकि वो यूज़र को उसको डिज़ायर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सके. तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. First will be monitor. The monitor is just like a television screen and it is used to display data and information. So when some data or instruction is being keyed in, the monitor displays the characters being typed. Suppose आप कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप कीबोर्ड्स की कीज को यूज़ करते हुए टाइपिंग करते हो, तो जो जो वर्ड्स आप टाइप कर रहे हो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको विजिबल होते हैं. और जो मॉनिटर होता है, इट इज सिंपली जस्ट लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन और उसका काम सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना होता है. This is about monitor. Now there are different types of monitor which are available. First is a cathode ray tube monitor.
A CRT, cathode ray tube monitor, is a relatively older type of monitor. So जो सबसे पहले शुरू में चलते थे बहुत बल्कि बहुत बड़े साइज के मॉनिटर्स वो होते थे CRT monitors. These were very big in size, very bulkier monitors and hence took a lot of desk space. So as you can also see in the picture, these are the CRT monitors, the cathode ray tube monitors. Next is LCD monitors, liquid crystal display. I want you to observe the picture. So these are the LCD monitors. These are comparatively very lighter as compared to the cathode ray tube monitor and they occupy very less space. So the next output device we will be talking about is printer. A printer is a device that produces the output on paper. Such an output is also known as hard copy and it may be in the form of text or graphics. तो जब भी आपको चाहिए कि आप कुछ टाइप कर रहे हो या फिर आपने कुछ प्रोसेसिंग करी है कंप्यूटर को यूज़ करके और आपको उसका जो आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है वो एक हार्ड कॉपी में चाहिए, तो हम इस काम के लिए प्रिंटर को यूज़ करते हैं. तो प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट को पेपर पे प्रिंट करके प्रोड्यूस करके देता है और हम उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी. अब वो आउटपुट टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. And there are many different type of printers. So these printers are also itself, very different in terms of size, speed and the quality of the output. Let us first talk about dot matrix printer. It is a type of printer that uses a print head to print the characters on paper. The print head moves it back and forth or up and down in the up and down motion on the paper. So basically the concept of dot matrix printer is of using a print head. तो जो जैसे प्रिंट हेड मूव करेगा वैसे वैसे टाइपिंग उसके जो पेज पे प्रिंट होता है वो वैसे वैसे सीक्वेंस फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. नाउ सेकंड इज इंकजेट प्रिंटर. द इंकजेट प्रिंटर वर्क बाय स्प्रेइंग आयनाइज्ड इंक ऑन अ शीट ऑफ पेपर. Magnetize placed in the ink's path direct the ink onto the paper in the desired shapes. So this is the working principle of the inkjet printer. Now the latest printers are the laser printer. They work on the principle of photocopier. So it uses a laser beam to produce an image on a drum. The next output device is speaker. सपोज आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है अपने कंप्यूटर पे या फिर कोई वीडियो देखनी है जिसमें कि आपको उसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है वीडियो देखते देखते आपको उसका ऑडियो भी चाहिए होगा, तो इस तरह का आउटपुट सुनने के लिए आपको स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो द स्पीकर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट. द कंप्यूटर्स हैव साउंड कार्ड्स दैट एनेबल द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट थ्रू द स्पीकर्स. So that was all about the different output devices. Now we are going to talk about software. So in order to perform any task, you have to give a set of instructions in a particular sequence to the computer. These sets of instructions are called programs. Now software refers to a set of programs that makes the hardware perform a particular set of tasks in particular order. So basically जब भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कंप्यूटर को देना होता है. तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं प्रोग्राम. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑल्सो रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक्स द हार्डवेयर परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क इन पर्टिकुलर ऑर्डर. अब हार्डवेयर से काम कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि हार्डवेयर से कोई पर्टिकुलर टास्क कराता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर फिर से होती है क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूटिलिटीज में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर डिवाइडेड होते हैं जनरलाइज्ड पैकेज में और कस्टमाइज्ड पैकेज में.
जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System software are then further divided into operating system and utilities, and application software are further divided into generalized package and customized package. Now let us talk about what are system software. A system software are a set of programs responsible for running the computer, controlling various operations of computer systems and management of computer resources. Operating system falls under this category. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि ओवरऑल जो ऑपरेशन होता है कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करने के लिए काम आता है, और इस कैटेगरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, मैनेजेस हार्डवेयर डिवाइसेस such as disk drives, keyboards, etc., manages and maintains the disk file system and supports application programs. Some popular operating systems are Unix, Windows and Linux. So I hope you have understood what is a system software. It is basically a set of program which is responsible for running the computer and controlling the various operations of the computer system and management of computer resources. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है OS, बिकॉज OS एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. Also OS manages all the hardware devices such as disk drives, keyboards, etc. It also manages the disk file system and also supports the application programs. Although the operating system provides all the features users need to use and maintain their system, inevitably they still do not meet everyone's expectation. This has led to another type of system software called utilities. Now these utilities are the program that bridge the gap between the functionality of the OS and the needs of the user. So the utility program are a broad category of software such as compress, uncompress, zip, unzip file software, antivirus software, split and join file software, etc. So these utilities basically are the extension to the system software so that they could bridge the gap between the operating system and the needs of the user. So these are basically customized for performing special operations which the operating system does not meet. Now let us talk about application software. Application software is a set of programs which are written to perform specific tasks. For example, an application package for managing library known as library information system is used to manage information of library such as keeping books details, account holder details, or any such details related to the library like book return detail, book issue detail, etc. So these are the application software which are specifically written for keeping a particular user group in mind. Now application software can itself now be further classified into generalized package and customized package. The generalized package, these are the user friendly software written to cater to users very general needs such as preparing documents, drawing pictures, programs, play games, etc. The common generalized packages, let us have a look at them. The first is word processing software for preparing documents, WordPerfect, MS Word, OpenOffice.org. Spreadsheets, so spreadsheets are used for data analysis, Lotus Smart Suites, MS Excel, OpenOffice, Apple Numbers, etc. Then presentations, presentation graphic, MS PowerPoint, OpenOffice.org Impress. Database management system, MS Access, OpenOffice.org, MS SQL, Oracle, etc. are the different database management systems. Then graphic tools, Paint, Shop Pro, Adobe Photoshop, these are the generalized package for graphic tools. Now customized packages. These are the applications that are customized or developed to meet the specific requirement of an organization or an institution.
For example, student information detail, payroll packages, inventory control, etc. These packages are developed using high level computer language. Now, as we are done with the software, the application software, the system software, now let us discuss about computer languages. Now, languages are a means of communication. Normally, people interact with each other through a language. On the same pattern, communication with computer is carried out through languages. Now, this language is understood both by the user and the machine. Computer languages are broadly classified as low-level language and high-level language. So, basically, firstly you should understand what is a computer language. See, as you know that language is a means of communication, so computer language is also a mean of communication for the user and the computer. So, communication with computer is also carried out through a language. So, this language is understood by the user and the machine. Now, there are two types of broad classifications of computer language, low level language and high level language. Let us first talk about low level language. The term low level means closeness to the way in which machine understands. The low level languages are machine language and assembly language. The machine language, this is the language in the form of zeros and ones, which are called as the binary numbers. This language basically is understood directly by the computer and it is machine dependent. So, the languages made up of zeros and ones is the machine language. Then assembly language, this is the language where the machine codes comprising of zeros and ones are substituted by symbolic codes which are also called as mnemonics to improve their understanding. So, it is the first step to improve the programming structure. The assembly language where the mnemonics are used was the first initiative towards improving the programming structure. Now, high level language. The low level language requires extensive knowledge of the hardware since it is machine dependent. So, to overcome the limitation, high level language has been evolved which uses normal English like easy to understand statements to solve any problem. Higher level languages are computer independent and programming becomes quite easy and simple. The various high level languages are BASIC, which is beginner's all-purpose symbolic instruction code, COBOL, common business oriented language, a standardized language used for commercial applications, FORTRAN, formula translation, developed for solving mathematical and scientific problems, one of the most popular languages among scientific community. Then C, structured programming language used for all purpose such as scientific application, commercial application, developing games, etc. Then C++, popular object oriented programming language used for general purpose. So, that was all about the high level languages. Now, let us discuss about compiler and assembler. The software, the set of programs that reads a program written in a high level language and translate it into an equivalent program in machine level language is called a compiler. I will repeat, the software that reads a program written in a high level language and translate it into an equivalent program in machine language is called as compiler. The program written by the programmer in high level language is called source program and the program generated by the compiler after translation is called as object program. As you can see in the diagram, the compiler is taking the source program, the high level language program as an input and giving the object program, which is the machine language, as the output. Now, the software that reads a program written in assembly language and translate it into an equivalent program in machine language is called as assembler. So, as you can see, the assembler takes the source in program as the input, which is in assembly language, and gives the machine language object program as the output.
So this was about the compiler and the assembler. Now let us briefly revise what all we have discussed today. Firstly, we discussed about the working of a computer. So we saw that the working could be broadly divided into 4 steps. The first was taking input, second was processing information, third was storing the information, and fourth was producing the output. So this was the basic functioning of the computer. Then we discussed about the input devices. Now what is the role of input device? The input device is used for taking the input from the user and then giving that information to the CPU. Then we talked about various common input devices, which were keyboard, mouse, then barcode reader, optical character recognition, optical mark recognition, light pen, etc. Then we had a discussion on the central processing unit. So the CPU is known as the brain of the computer, which itself consists of 3 further components: the control unit, arithmetic and logical unit, and the memory unit. The control unit is known as the nervous system of the computer, as it coordinates the functioning of the different units. The ALU performs arithmetic and logical operations for the computer, and the memory unit is used for storing the data and the instructions for processing. Then we had a discussion for output devices. The output devices are used to give the information to the user, the processed information which we have received from the CPU to the user. Then we discussed about the different kinds of output devices, monitors, printers, etc. Then after that, we had a discussion on what is a software. A software is a set of program which is basically designed for performing a specific task. The software is then further divided into generalized package and customized package. Then we had a discussion on what is a computer language. A computer language is basically a medium through which the machine can interact. Then the computer language is again divided into high level language and low level language. So after that, we had a discussion on what is a compiler and what is an assembler. So basically a compiler is a source the compiler takes the source program as an input, which is a high level program, and gives the machine language program, which is an object program, as an output. And the assembler also takes a source program as assembly language program and gives output as the machine language program, the object program. So that was all about the today's session. I hope the basics of computer are pretty clear to you. Thank you so much for attending the session.